running around. Running around in the house, running around outside the house. We're losing patience. The little patience that we see that our mothers had, or our fathers had, maybe that little bit of patience, we're losing that. Why? Because we have no companions. We do not have anyone to vent out our feelings. I'm sure everybody knows about female bonding. Many of us are very close to our moms. Many of us are very close to our sisters. Many of us are very close to our masis. Why? That female connection, that female bonding, which is so important in today's life. Let me also tell you that here in the army, we do not need each other as friends. We need each other as family. I think, me for that matter, I have been born and brought up in the army life. For me, my cousins, my family are secondary, but the bonds that I have shared here, they are like immense. For me, they are my family. I never say that, I will be able to attend, say, my cousin's, daughter's wedding, but I will definitely be there with a person who has been there through thick and thin in the army life. So let me tell you, we here today in this room, the energy that we share with each other, the bond that we create today may feel very simple. But let me tell you that each and everybody who is present in the room will definitely carry some inspiration, some memories to cherish later in life. Today, we are gathered here to show that how just simple evenings can be a pause in our busy lives. Simple get-togethers can bring so much of peace to all our lives. Also, some little playfulness is so important when all of us are together. I don't know how many of you have taken trips with your girlfriends. How many have gone for hiking with your girlfriends? Maybe your hostel days, maybe your college days, you went for a movie with them. That would always be there in your memories. And ladies, let me tell you, let's bring that bond together once again. Let each one of us feel that we are together, we are one. Let us start what our old parents and our old generation left behind. Let's not be so busy that we do not know each other's names in one station. With this note, ladies, I would love to play a game with you. Hum bola, tum bolo, tam bola. Or hum bola, tum bola, tam bola. This was what the previous generation played. We are too busy and we have too much of effort to put in when we think of tambola. Oh my God, it's my lady's turn. Tambola kaun khilayega? And this is something that, one person will look at the other person and the other person will look at a third person, because at this particular moment we feel that all of us are very, 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 very busy. But here, there is a twist to tambola today. We are also learning, and thankfully we had an officer amongst us, a young officer who is, I think, just 1 year older to my elder daughter, who taught us how to play tambola, and we are so thankful to Captain Anguraj. So Captain Anguraj has taught us how to play tambola the digital way, and I would request Shilpa and Afreen to help us out in learning how to play tambola. Are we all ready? Yes. Let's play. We have Dr. Radha Gaur with us. Let me just share a few things about her journey, and let's get inspired by her journey. Dr. Radha Gaur, for nearly 30 years, she has been shaping young minds through academics. And now she has reinvented herself as a health enthusiast and published author, finding new ways to connect with people through her love for writing and reciting verses. Her story would remind each one of us
that it's never too late to explore new passions, to grow and to shine. So from her word of mouth, I will request Dr. Radha Gaur to share her journey. It is going to be her journey, but maybe few of us can get inspired. Dr. Radha, please. Good evening, Mrs. Kushwa, and all the pretty Fauji naris looking gorgeous in lovely sarees. आगे कहने नहीं है पर मैंने नारी लिख ली है तो मुझे बोलना है ना, और ये कह के हम आगे फिर वही काम में लग जाते हैं. But somehow things started going wrong my way. जो पहला मेरे को एक लगा, one thing more I will add. I always feel कि what we have been given by God, if somehow we are not grateful for it, वो चीज़ें धीरे धीरे हमसे छिनती चली जाती हैं. तो मैं सुबह उठ के हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाती हूँ ईश्वर को. बट वन थिंग आई ऑलवेज फॉरगॉट माई हेल्थ. बीइंग हाइपर एक्टिव, आई ऑलवेज थॉट कि अरे हमको क्या होना है, हम तो ऐसे ही रहेंगे. आई नेवर थॉट इवन कि कभी मुझे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. एंड द फर्स्ट ब्लो विच हैड मी डाउन वाज माय डिस्क प्रोलैप्स. वी वर अब्रॉड, नो हेल्प देयर, and somehow I didn't know how to manage things. But slowly, it took a lot of time, but somehow I tried to come back on my feet. आपको मेरी पिक्चर दिख रही है, ये दो मैंने बड़ी चीटिंग करके बहुत अच्छी वाली डाली है. अदरवाइज अगर मेरे हस्बैंड से मांगी गई होती तो वो ट्रू पिक्चर भेजते. आई वॉज वेइंग ऑलमोस्ट 83 kgs at a time. And you can imagine with a disc prolapse, to walk around was a very big difficulty with no help at all. Nobody to even make a chapati for your kids. Somehow I got back on my feet, वापस आए और सब कुछ हुआ. फिर अपनी जर्नी फिर शुरू हो गई, वही तुम क्या जानो विनोद बाबू करके. एंड उसके बाद somehow I was diagnosed with diabetes. very very obese, prosperity पैसे में नहीं बड़ी पर obesity पूरी थी. Somehow that was a surprise to me because nobody in my family is a diabetic, no history at all. So maybe they say it might be stress. I don't have any such inkling, but then also somehow, and as is my motto, live life king size. So मेरा 1AC भी 13 था, which the doctor was also surprised, and immediately I was put on insulin. Twice I, on my own, mix and match and reading here there, trying to figure out things I could get rid of the insulin. But somehow my medication started. और एक के बाद एक मेरी टैबलेट्स बढ़ती गई. एंड आई थॉट जैसे कहते हैं कि खाओ और एक पिल और उसके बाद एक रसगुल्ला भी ऊपर से खा लो तो बैलेंस हो रहा है. आई केप्ट डूइंग दैट ओनली, नेवर रियलाइजिंग दैट डायबिटीज इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर and it will damage your other organs also. And somehow these things started happening with me also. And then came the final Delta wave, which was very deadly. And we were shifting the accommodation. My husband was in a field posting, so I had to shift the accommodation. And somehow I was. आप देखो. वहाँ से ये poems का idea आया मुझे. And she was just थोड़ा एक सजेशन था कि आफ्टर ऑल दोज इयर्स ऑफ मैरिज ऑल्सो समटाइम्स यू फील एज इफ यू आर नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड इन दैट हाउस बाय द इन लॉज और द फैमिली और समथिंग. एंड इन दिस जर्नी स्पेशली फौजीज के साथ बहुत होता है. एंड इन दिस जर्नी व्हाट हैपेंस कि समटाइम्स इतना सा दुख हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का आपके दिल से चल बनाए आशियाँ.
उसी पे कुछ एक लाइंस हैं, पहले इन लॉज की कंप्लेंट्स पे आती हैं। दिल को शांति मिल जाएगी फिर। वो लड़की नई नवेली शादी हो रही है और वो वर्णन करती है, जब कहारों ने डोली उठाई सखी, आंख से भी हुई मुस्कुराई सखी, जब कहारों ने डोली उठाई सखी, आंख से भी हुई मुस्कुराई सखी, सुर्ख जोड़े में सपने सुनहरे लिए, मैं चली हूँ पिया घर सजाने सखी, आंख सहमी हुई मुस्कुराई सखी, भूल नादान अल्हड़ सी अटकेलियां, भूल नादान अल्हड़ सी अटकेलियां, मैं बचपन वहीं छोड़ आई सखी, आंख सहमी हुई मुस्कुराई सखी, हर रिवायत नई नए एहसास हैं, हर रिवायत नई नए एहसास हैं, मुझे घर की बहुत याद आई सखी, आंख सहमी हुई मुस्कुराई सखी, मैं ढलती गई एक नए रूप में, मैं ढलती गई एक नए रूप में, काम बाबा की बातें न आई सखी, काम बाबा की बातें न आई सखी, आंख सहमी हुई मुस्कुराई सखी, साल गुजरे तो ये घर मेरा हो गया, साल गुजरे तो ये घर मेरा हो गया, मैं फिर भी रही हूँ पराई सखी, मैं फिर भी रही हूँ पराई सखी, आंख सहमी हुई मुस्कुराई सखी, मैं बचपन वही छोड़ आई सखी। अब जो उसकी कंप्लेंट है वो अपने फैमिली को कह रहे, तुम लोग सोचते हो बिल्कुल मस्त हो और सब लोग अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे भी लगता है कोई मेरी दिल की बात सुने। भेज भैया को कभी नैयर में बुलवाया नहीं, गीत था जो नेह का तेरे प्यार ने गाया नहीं, नैयर मायका पेरेंटल होम, भेज भैया को कभी नैयर में बुलवाया नहीं, गीत था जो नेह का तेरे प्यार ने गाया नहीं, दी सभी खुशियाँ मुझे फिर भी पराया धन कहा, यह अजब सा फलसफा मुझको समझ आया नहीं, गीत था जो नेह का तेरे प्यार ने गाया नहीं, भेज कर डोली मेरी चुपचाप आंखें मूंद ली, भेज कर डोली मेरी चुपचाप आंखें मूंद ली, भेज कर पतिया कभी भी हाल मंगवाया नहीं, भेज भैया को कभी नैयर में बुलवाया नहीं, करके कन्यादान यूं पल में पराया कर दिया, करके कन्यादान यूं पल में पराया कर दिया, क्या मेरी बचपन की यादों ने भी भरमाया नहीं, भेज कर पतिया कभी भी हाल मंगवाया नहीं, बांध दी तकदीर जिससे कर दिया जिसके हवाले, अफसोस है उस घर ने मुझको अब भी अपनाया नहीं, भेज भैया को कभी नैयर में बुलवाया नहीं, गीत था जो नेह का तेरे प्यार ने गाया नहीं, तेरे प्यार ने गाया नहीं।
Now raffle number 3. Raffle number 2. Number uno, finding number 1, raffle number 1. Please come forward. Please come forward. Please come forward. एक और गेम होने वाला है. Here's for the speaker. Thank you so much. Thank you. Do you all know that she is ये कवि है, कवित्री है. और ये every Sunday she goes to different places. कभी वर्सोवा में, कभी बर्ली में, कभी कहीं वहाँ पे अपनी कविताएं सुनाती है. और आज we were lucky enough to listen to few of them. And she's even written a book on her. Do you all know this? Yeah. Everybody knew this? No. Oh, most of them. So बस सबको ये पता था how she has fought this, कहाँ से कहाँ की journey. पर इतने इत्मीनान से सुनी थी? नहीं, है ना? इसीलिए आज मैंने बोला दिल खोल के बताते हैं, दिल खोल के सुनते हैं इनसे, क्योंकि when I had just come